PWDs and senior citizens. These four categories we intend to focus more, which I'll explain. भारत निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष, प्रलोभन मुक्त, इंड्यूसमेंट फ्री तरीके से विधानसभा का आगामी निर्वाचन चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है और हमारा प्रयास है कि वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, महिलाओं, नए मतदाताओं सबकी भागीदारी बहुत ही सशक्त तरीके से आने वाले चुनावों में हों. Through the vast reach of the media, I would request first that interaction will start with the wish that our appeal is being heard by most of the voters and they will come out to participate wholeheartedly in this forthcoming festival of democracy. Before going into the mode of the elections, we have an extensive process of consultation. And the magnitude and scale of our elections is really awe-inspiring, as you all know. For the last few months, our entire team, which you are seeing here, has been working on organizing these elections, ranging from the electoral rolls to the management of logistics to various things which we will explain. Periodic reviews were done by them. The commission also went to the states where the elections are due, and we had detailed meetings with the DOs, with the SPs, and with all the enforcement agencies, chief secretaries, DGs, and everyone who is involved in either conduct of elections or in the enforcement side of this. We also simultaneously discussed the COVID situation, as it has been bothering in the last two rounds of elections. We had a detailed discussion with the Health Secretary, Union Health Secretary, and also with the Chief Secretaries and DGs of the concerned states, Health Secretaries. It doesn't seem to be that much of a concern now, but still, the states have been advised that they will continue to follow the five-fold strategy of test, track, treat, vaccinate, and follow the appropriate behavior. We have revised our guidelines, which are in this form, essentially saying that they have to follow the norms set by the Health Ministry and also the respective SDMAs in the states if there is any situation that warrants the tightening or the graded response to the COVID situation. Friends, the first and foremost thing in conducting an election is the electoral roll. A healthy, error-free electoral roll is the primary step, that is the base on which the entire elections are held. And the special summary revision has just happened. The electoral rolls have been published in the concerned states. And during this exercise, the Commission has laid a special emphasis on registration of new age voters, women, transgenders, and persons with disabilities. In order to ensure a clean electoral roll, the photographically similar entries, PSCs, and demographically similar entries have been found through the use of software and field verification. They were circulated to all the DOs and also to the respective BLOs to do a field verification of those who are found to be in the demographically similar entries or the photo-similar entries. The special proactive steps were taken for the registration of PWDs, old age, and also the third gender. In this, we took help of the welfare departments, respective departments. For example, the welfare department, whenever the question of the registration of PWDs came. So whomsoever they were giving scholarship, we just cross-checked that they are our voters. To address the issue of urban apathy, we found that there is generally an urban apathy. If I can give you an example, in the 2019 elections, general elections, and if we list all the, say, 7-8 districts where the voting has been least, 4 of them happen to be the metropolitan cities.
It's all in our statistics book, which we have published. I am not naming them here, but we are focusing on the urban apathy very, very seriously. In this, our CEOs are signing the MOUs with the departments and with the industry and with the organizations who have more than 500 persons. And we have reached out to the colleges and the educational institutions. What is expected is that after the voting, if the nodal officers are appointed in these organizations with 500 plus voters, and we will try and persuade those voters after the elections, the leave-taking and non-voting voters, we will try and reach to them and say, please join next time. So that's a kind of a awareness which we will start. The Election Commission of India, in pursuance of the legal amendments, had made 4 dates, as you are all aware. And this, by virtue of this, there is every quarter, first of the every quarter, one can apply for the registration. And the now onwards, the electoral rolls will be updated every quarter. और निर्वाचन आयोग की इस पहल पर कानून में जो बदलाव किए गए, जिसके कारण 4 डेट्स में संभव है, और अब पोल गोइंग स्टेट्स में नामांकन के दिन तक भी अभी मतदाता में सूची में नाम जुड़वाया जा सकता है. तो इसमें यह भी आपके माध्यम से अनुरोध है कि अगर इतनी मेहनत करके नए वोटर्स को जोड़ने के लिए कमीशन ने और फील्ड स्टाफ ने मेहनत की है, तो उनको भी आगे बढ़ के वोट देने आना चाहिए. Friends, I'll also tell you how many specifically benefited by this amendment. I'll come to it and tell you. In an election, voters are our primary stakeholders, and therefore, even those who do not have a voter epic, by and large, we have now ensured that the voting epic card reaches everyone. It's being delivered even now, but by chance, if you don't have, there are these many, almost a dozen other documents through which one can vote. So one need not be worried. What is important is to come to the booth with any one of these, even if one doesn't have an epic. Now the next important thing is the polling station. And that's the next point at which we interact with the voter. The effort is to make the voting experience, it's quite protocol based, but we are still trying that the experience becomes far more enjoyable in the true spirit of the festival of the democracy. Our COs and DOs have been asked to identify the lowest polling percentage booth in each constituency. This is what we are doing to increase our awareness and persuade the voters to come and vote. And they are going personally to the polling stations which are having the least percentage of voting, below the average in their each respective constituencies. So they'll try and find out what is the issue, why there is an lesser percentage of voting in those particular booths. They'll try and bring them up to the level of the general voting in that particular constituency. Friends, कमीशन का एक दूसरा फोकस है जो हमेशा रहा है, उसमें आगे हर बार नई चीज जुड़ती है, वो ये है कि हर पोलिंग स्टेशन पर कुछ बेसिक सुविधाएं निश्चित रूप से उपलब्ध रहनी चाहिए. तो ये जितनी बेसिक सुविधाएं हम आपको स्लाइड के माध्यम से भी दिखा रहे हैं. एवरी पोलिंग स्टेशन वुड हैव ए रैंप which is accessible for the PWDs, drinking water, electricity, shade, and volunteers for the PWDs for the old age. Every polling station would be on a ground floor so that it is not problematic for anybody to climb. तो जितना भी कंफर्ट पोलिंग स्टेशन पे दे सकते हैं वो देने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, और इन इलेक्शंस में 100% सर्टिफिकेट डीओ से लिया जा रहा है कि सब पोलिंग स्टेशंस पर ये सुविधाएं उपलब्ध है. फ्रेंड्स, कुछ पोलिंग स्टेशन ऐसे होंगे जिसमें जो सिर्फ महिलाओं के द्वारा ही मैनेज्ड होंगे. ऑल पोलिंग पर्सनल एंड ऑल्सो इवन द सिक्योरिटी स्टाफ 100% women oriented. So this is every assembly would have at least one and more in certain pockets. So
महिलाओं के सशक्तिकरण को दर्शाने का चुनावों के इस माध्यम से भी हम लोग एक बहुत सशक्त माध्यम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि एक्सपीरियंस भी एक बहुत अच्छा हो और साथ साथ एक सशक्तिकरण को भी वो प्रदर्शित कर सके। फ्रेंड्स, सिमिलरली some polling stations will be managed entirely by our PWD staff, or they will be ready to welcome the voters. And आपके माध्यम से ये भी हम लोग कहना चाहते हैं, और कमीशन में बहुत ही इसके बारे में सेंसिटिविटी है, कि जो PWDs हैं वो एक्चुअली बहुत मायने में हमसे बहुत ज़्यादा एबल्ड हैं। उनका चिंतन, उनका भाव, उनके इमोशंस, उनकी सहनशीलता, बहुत चीज हम लोगों से ज्यादा है। सो व्हाट दे रिक्वायर इज एसेंशियली द इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज, नॉट मियर सिंपैथी। एंड देयरफॉर वी आर वेरी वेरी कॉन्शियस दैट वी विल कवर all the PWDs, mark them. I'll give you a figure as to how much we have marked all India, and you would be happy to know that. I'll come to that slowly. Now, maybe at the cost of repeating, I would reiterate, if we as the Election Commission team put in such concerted efforts to ensure a polling station within 2-kilometer reach for voters, replete with all kinds of facilities, I would appeal to the voters to value their hard-earned right to franchise and come out to vote in maximum numbers, so that मतदाता रूपी इंद्रधनुष हर बूथ पर दिखाई दे. Now I come to, friends, the postal ballot facility for the absentee voters, because it would be happening first time in these elections. Commission has decided and introduced this in the last round of elections, that 80 plus age voters, PWDs and COVID-infected voters, we would provide a Form 12D, and if they are willing, if they want to come to the polling station, every effort would be made to make it very, very comfortable there, and we encourage it. But in case somebody is ill and is not able to come, the commission would go to their house and get the vote conducted. And जैसे पिछली बार एक दो जगह में ये सूचना मिली थी कि कुछ शिकायत मिलने की उम्मीद थी कि आपने वोटर्स का, उनका कोई इन्फ्लुएंस हो सकता है घर पर, उसको खत्म करने के लिए भी एवरी एंटायर प्रोसेस वुड बी वीडियोग्राफ्ड. साथ में कैंडिडेट्स के एजेंट्स को पहले से ही सूचित किया जाएगा कि किस दिन वोट लेने जाएंगे, वो साथ में जाएंगे, जा सकते हैं, एंड एवरीथिंग वुड बी वीडियोग्राफ्ड. सो without compromising the secrecy of vote, the facility of voting would be extended right from the comfort of their home. And you would be happy to know, in the entire country, there are 1.82 crores voters who are 80 plus. And you would further be happy to know there are 100 plus voters, centenarians, who are crossing 2.5 lakhs. Imagine that they are all part of our voter list. And we are so happy, so privileged to serve them better. Actually, किसी भी सोसाइटी में अगर हम एल्डर्स की देखभाल नहीं करते, उनको सम्मान नहीं दे सकते, तो it's not a right way of our human behavior. तो हम लोग इसके बारे में बहुत सजग हैं, और वोट की सीक्रेसी को पूर्णतः अक्षुण्ण रखते हुए उनके घर से वोट भी लेंगे अगर उन्हें इस बात की जरूरत होगी. Similarly, for PWDs, all the facilities starting from a volunteer to the wheelchair, if they require, would all be available at the booths. And again, to give you another interesting figure, there are 82 lakhs PWDs also who are marked in our voter list. And our entire effort is to make it inclusive and accessible. The Commission puts a whole lot of emphasis on making the elections truly participative, accessible for all our PWD brothers and sisters. Friends, I would just briefly touch the technological interventions. There is a whole lot of technology which will go into the elections, starting from for the ease of the voters and also for managing the inducement-free elections.
Firstly, the voter helpline, you can see all kinds of informations in that, including your booth location, including the candidates, the informations about them and results. The another interesting and very important application is a सी विजिल चीज गलत नजर आती है तो कृपया उसको सी विजिल पे डालें. कुछ स्टेट्स ने बहुत इफेक्टिवली सशक्त तरीके से इसको यूज किया and this is becoming an interesting tool in our hands to control the menace of any kind of money or the power or misuse by anybody. So please, again I would request that agar nagrik vigilant hai, so vigilant nagrik, C is the citizen become vigilant, and it is your election. If you would help us, we will guarantee that in 100 minutes you get a written response on the same mobile number from which you make a complaint. Similarly, PWD app also gives the opportunity to the PWD voters to go there and even register for facilities or facilitation at the booth. उनको कुर्सी चाहिए, उनको कोई मदद चाहिए, वो वॉलंटियर तो मिलेगा ही, वो सब इस पर पहले से बुक कर सकते हैं. Another interesting and very, very critical application is KYC, Know Your Candidate. तो कैंडिडेट का पूरा एफिडेविट which will give all his assets and liabilities and all the criminal background, if any, would be made available to the voters. Through this app of Know Your Candidate, अगर किसी भी कैंडिडेट की कोई भी राजनीतिक कोई भी आपराधिक पृष्ठभूमि है तो वो इस पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगी क्या अपराध है उनके ऊपर में, किस तरीके की एफआईआर है, उसकी क्या डिटेल्स हैं, केस की क्या स्टेटस है. एंड इन एडिशन, एज यू ऑल नो, 3 times दे विल हैव टू पब्लिश इन द न्यूज़पेपर्स. तो कमीशन का काम है कि अगर की क्रिमिनलिटी इन द इलेक्शंस, इन द पॉलिटिक्स गेट्स एलिमिनेटेड, रिड्यूस्ड, इफ नॉट एलिमिनेटेड, उसके लिए हम ऐसी व्यवस्था करें कि कम से कम उसकी पृष्ठभूमि वोटर के सामने स्पष्ट दिखाई दे. देन इट इज वोटर्स चॉइस. वी एनेबल द वोटर टू टेक एन इन्फॉर्म्ड चॉइस. इट्स पार्ट ऑफ द डिस्क्लोजर एंड ऑल द एसेट्स लायबिलिटीज वुड ऑल्सो बी नोन इन दिस. सो योर कॉन्स्टिट्यूएंसी, योर कैंडिडेट, हिज बैकग्राउंड, फाइनेंशियल, क्रिमिनल, इफ एनी, would all be known through the Know Your Candidate. So please use this. Not for voters, for the candidates also there is an application called Suvidha. जितनी भी entitlements उनके हैं वो सब online apply कर सकते हैं. And we have directed, Commission has directed that it will be served to the candidates on first in, first out basis, so that there is no bias. Whosoever locks in first, whosoever applies for a ground or for any facility first, and if that is a limited space, he or she will be given the candidate first. Friends, we also had a detailed interaction with the enforcement agencies, and to just tell you that no cash would move in the poll-going states between after 5 o'clock till 10 o'clock in the morning. Banks have been directed कि कोई भी कैश का मूवमेंट अपनी वैन के थ्रू नहीं करेंगे. ऐसा देखा गया है कि उसी वैन को यूज करके कुछ ना कुछ लोग कोशिश कर सकते हैं कि उसमें कैश मूव हो इलीगल, उसको मना किया गया. एयरपोर्ट्स वुड बी अंडर वॉच. द जीएसटी वुड कीप ए ट्रैक ऑन ऑल द ई-बिल्स टू फाइंड आउट that no consumer goods, there is no spurt in supply of consumer goods in that particular state for distribution as a freebie or as an inducement. All the borders would be sealed in these states. There would be there would be strict watch on any kinds of money or cash or drugs or that kind of thing. Friends, during this phase in the communication age, there are a whole lot of misinformation and fake news and narratives which get generated. So through you again, we request the voters to be vigilant, to at least see that पिछले कितने इलेक्शन में सेम न्यूज़ उसी प्रकार से चल चुकी है. उसको कम से कम आगे बढ़ाने से पहले
अपनी थोड़ी सी विजडम लगा के सोच लें कि ये सच हो सकती है कि नहीं, फेक नैरेटिव्स में आगे बढ़ाने में मदद ना करें। अगर लगता है ठीक है तो जरूर आगे बढ़ाएं, उनका हक है। बट वी हैव एस्टेब्लिश्ड सोशल मीडिया टीम्स in the CO office and all the district magistrates and SSP's offices to keep a strict watch. And if anybody tries to create rumors or create fake news or news which are objectionable, the appropriate action the teams would take as mandated under the law. So, having given you an overview of the efforts which have gone into the entire preparation, now I would come to the main thing for which you are waiting. And to tell you first, the term of the Legislative Assembly of Himachal Pradesh is expiring on 8th of January 2023. And there are 68 ACs across 12 districts, and with the specific seats reserved for SCs and STs. So out of 68, 17 seats are reserved for SCs and 3 seats are reserved for STs. As you see the data on this slide, the forthcoming legislative election, our teams would be ready to serve more than 55 lakh electors, of whom about 67,000 are service voters and 56,000 in the state of Himachal would be PWDs. And you would be happy to know that there are 1,184 voters who are 100 plus. And we have reached everybody's house as a mark of respect towards them. And you will be happy to know, and it's a motivational thing for our young voters. There are voters who have voted in all elections since 1950. All, including the local body elections. And there are 1,184, and they come to, many of them come to the booth. They say we do not need the Form 12D, we'll come to the booth. So they are really the source of inspiration for all of us. And हमने उनको सबके घर में एक चिट्ठी भेज के अपने BLO साहब के थ्रू या अफसर्स के थ्रू सबको सम्मानित भी किया और आभार भी प्रकट किया कि आप ही की प्रेरणा से बाकी लोग भी आगे बढ़ के वोट दे सकें. Friends, there are 1.2 lakh voters who would be 80 plus in Himachal, and 1.86 lakh voters would be first time voters between 18 years and 19 years. And these are the ones with whom we are very, very focused way we are connecting with all of them by organizing large number of events in their colleges and institutions. As you know, the amendment in section 14 enabled us to register voters in the 4 qualifying dates. तो आप इसको अगर मैं ऐसे समझाऊं कि जो लोग 1 जनवरी, अगर ये अमेंडमेंट ना होता तो 1 जनवरी 22 को जो भी लोग 18 इयर्स के हो गए वही वोटर बन पाते. उसके बाद में 1 जनवरी 23 की क्वालिफाइंग डेट से वोटर बनते. बट बिकॉज ऑफ दिस चेंज in Himachal alone, those who were born after 1st January 22 but before October 22, 43,173 additional voters have been enrolled and they would be able to participate in this festival. This is only because of the amendment which happened, and you can extrapolate it and see because of these 4 changes. And now what we have done and what will happen in the SSR now, even if somebody is 17 and is going to be 18 next year till October 2023, in the new SSR which is coming in the entire country, they can apply in advance. And we take the responsibility of keeping that application with us and making him or her the voter the date on his or her birthday. And our officers will send them a kit, a welcome kit for the new voters, which will contain the epic card, which will contain how to vote, which will contain about how the EVMs function, which will contain the the website links to where they can educate themselves about the election process. We
through you, call upon all voters in Himachal to come out and vote. Their participation should take inspiration from the elders who are there in that state, and our fervent appeal that all stakeholders maintain COVID appropriate behavior. Friends, आयोग ने हमेशा मीडिया को चुनावी प्रक्रिया में अपना सबसे बड़ा एलाई माना है. It's a kind of a natural ally. That is why first time we come here and announce. There is nobody who comes to know of this. मैं दोहराना चाहूंगा कि आपके माध्यम से सभी वोटर्स को एक बार पुनः अपील करेंगे, and the exact schedule for the state would be as it's being shown on your slides. वो दे दो नोटिफिकेशन की डेट्स दे दो. इफ इट इज विजिबल, the date for the Gazette notification would be 17th October. The election would be in one phase. Last date for nomination would be 25th October, that is Tuesday. Date for scrutiny would be 27th. Last date for withdrawal would be 29th. And date of poll 12th November. And date of counting 8th December. And the entire process is completed by 10th of December. So again, through you with the appeal to all the voters on behalf of all of us to come and vote in the state of Himachal, I hand over to Chef Ali ji back. Thank you. We'll take questions. Neeraj, आप शुरू करें. माइक दे दें यहाँ फर्स्ट रो में. नीरज. हेलो हेलो जी सर, नीरज हूँ न्यूज़ 18 इंडिया से, नेटवर्क 18 से. जी, मेरा सवाल तो एक ही है, लेकिन उससे जुड़े कई क्लैरिफिकेशन चाहिए होंगे. क्या गुजरात, पहला तो ये कि गुजरात चुनाव की घोषणा अपने साथ में करने का फैसला क्यों लिया, साथ में न करने का फैसला क्यों लिया? इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, क्या गुजरात विधानसभा चुनाव की घोषणा 8 दिसंबर के बाद होगी? क्योंकि गुजरात के विधानसभा की अवधि में वक्त अभी काफी है, क्योंकि पिछली बार 10 दिनों के फासले पे दोनों राज्यों के चुनाव की घोषणा की गई थी. और तीसरा सवाल यह है, दोनों सवालों के जवाब से वो होगा कि आप ही लोगों ने रूल बनाया है कि 6 महीने के अंतराल के अंदर में जिन राज्यों के विधानसभा चुनाव होंगे उनकी घोषणा साथ में की जाएगी. अभी साल के शुरुआत में उत्तर प्रदेश में हमने देखा था, उत्तर प्रदेश के साथ बाकी 4 राज्यों के. तो जो रूल चुनाव आयोग बनाता है, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि उसका उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन उससे आप लोग पीछे हट रहे हैं, उसी को आप लोग रूल को बदल रहे हैं. तो ऐसा क्यों है, अलग अलग क्यों है? 6 महीना के अंदर 2 राज्यों के विधानसभा की अवधि खत्म होती है और आप लोग जो हैं अलग अलग चुनाव की घोषणा कर रहे हैं. एक साथ 3-4 क्वेश्चन ले लेते जी, Fine, एक और ले लेते. हाँ, सर मेरा नाम रवि त्रिपाठी है, मैं जी न्यूज़ से हूँ. मेरा सवाल ये ਸੋ ਹਿਮਾਚਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ. ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ VOTING ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ. 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇਗਾ. 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਸਿੰਘਾਸਨ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਕੌਣ ਬੈਠਦਾ ਹੈ. 68 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਤੇ VOTING ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ. ਸੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ VOTING ਹੋਵੇਗੀ. 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ. 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ. 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ. ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ, 92 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ. ਖੈਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੱਸੇਗੀ, ਵੋਟਰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ. ਸੋ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ. ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ VOTING ਹੋਵੇਗੀ. 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ. 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇਗਾ. 68 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਤੇ
ਇਹ VOTING ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਿੱਗਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ VOTING ਹੋਵੇਗੀ। 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਦਲਾਅ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 5 ਸਾਲ BJP, 5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ। ਗੱਲ 2017 ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ BJP ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਖੈਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲੀ ਆਵੇਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ।